Hello and welcome to Kotak Securities. This is Indu Chaudhary. You are watching Kotak Chatroom, and the company focus today is Adani Wilmar. The company's IPO is open for subscription from 27 January to 31st January. Joining in today, Mr. Angshu Mallick, CEO and MD, and Mr. Shrikant Kanhere, CFO of Adani Wilmar Limited. Gentlemen, welcome to Kotak Securities. Thank you so much for joining in today. Mr. Malik, पहला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे. You have been with the company for more than 20 years. We want to know more about Adani Wilmar, as in the company's origin, business, strategy, uh, future outlook. इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे. At Adani Wilmar, we have spent more than 20 years. I have been here since inception. And let me tell you, our senior management and middle management, all of them are more than 10 years. And we have a sizable number of people who have spent almost 15 to 20 years in this company. One of the strengths of the organization remains stability in terms of managers and their ability to deliver results consistently, continuously. Now, Adani Wilmar is a 50-50 JV between Adani Group and Wilmar. As you know, Wilmar is world's largest palm oil player, but they are also the world's largest rice processors, from paddy to rice. They are also the world's largest oleochemical player. They have second largest sugar refiners and wheat flour processors. So when it comes to Wilmar, they provide us with the knowledge of edible oil, rice, wheat flour and sugar. So these four big ticket items, along with oleochemical business, specialty fats business, lot of knowledge comes from Wilmar in terms of the R&D support and technical support. Over the years, we have built the brand fortune and distributed edible oil, and then we went into staples, looking at the kitchen essentials. Today, we are present in 5 out of 6 essential kitchens essentials that is required by every household, whether rural or urban. So we are present in 1 out of every 3 home in the country, and that is how we have put forward the products across the country. That has been the history so far. My next question would be to Mr. Kanhere. Why the company has decided to raise funds through IPO? Is this because there is a boom in the IPO market or anything else? And secondly, I wanted to add one more question, which is related to the issue size of the IPO. पहले इशू साइज 4500 करोड़ रुपीस का था, जिसे रिड्यूस करके 3500 करोड़ किया गया. So, what is the reason behind it? Yeah, so the purpose of IPO, as we earlier said, is of course to fund the expansion of the company for going forward. We are into this business for last 20 years now, and in 20 years we have transformed this company from edible oil to the food business, food FMCG, and therefore the next strategy for next 5 years is going to build this food business, and that's the very reason why what we have come up with the IPO, because most part of the IPO proceeds will go into building capacities and expansions for the food business and integrated plants which we want to put. So just to fuel more growth on food front, I mean, this is the basic purpose of this IPO. Now, as far as this size of the IPO is concerned, it is reduced by 20% because that is what has been allowed also. So when you file an IPO, normally you file up to some amount, and then regulator allows you to either increase or reduce by 20%. So what we have done is we have done away with the general corporate purpose of 900 crore, and this is basically an area where the company is not very sure that where they will be spending this money, and therefore we took out this portion of 900 crore of general corporate purpose, just to make the size of the IPO more optimum and efficient. And this also helps you to manage your return matrix better. Which offering are the best contributor towards the revenue, and what is your market share in those segments? We have been in edible oil, and आप जानते हैं कि edible oil जो है हर प्रांत के अपने अपने एक प्रेफर्ड ऑयल होते हैं. जैसे गुजरात में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे
ग्राउंडनट ऑयल या सिंग तेल बोलते हैं या कॉटन सीड ऑयल है, वैसे ही बंगाल में, असम, बिहार में मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, साउथ में सनफ्लावर ऑयल है. सो डिफरेंट ऑयल डिफरेंट प्रांत में यूज किया जाता है. तो वी हैव टू बी इन ऑल द ऑयल्स दैट यू ऑपरेट बिकॉज नेशनल लीडर, सो वी हैव टू बी इन ऑल द ऑयल. नाउ हर ऑयल का अपना अपना एक मार्जिन स्ट्रक्चर या ब्रांड का स्ट्रेंथ होता है, बट सबसे अच्छा मार्जिन मस्टर्ड ऑयल में आता है क्योंकि ये टेस्ट ऑयल है और टेस्ट ऑयल में कंज्यूमर्स जनरली शिफ्ट नहीं होते ब्रांड, या उनका जो है स्टिकीनेस एक ब्रांड के साथ ज्यादा होता है क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द ब्रांड, और खास करके ये टेस्ट ब्रांड होता है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल में सबसे ज्यादा अच्छा कंसिस्टेंट मार्जिन है. एंड वी आर नंबर 1 ब्रांड ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन द कंट्री. नाउ व्हेन इट कम्स टू अदर थिंग, स्टेपल्स में अभी हम लोग आटा में 2 साल हुआ चक्की फ्रेश आटा में आए हैं, एंड पूरा इंडिया में चक्की फ्रेश आटा आजकल बिकता है. इवन साउथ बहुत बड़ा मार्केट है चक्की फ्रेश आटा का. ब्रांडेड आटा का बड़ा मार्केट तो साउथ है, एंड वी आर नंबर 2 प्लेयर. तो 2 साल में वी कुड मैनेज टू बी नंबर 2 आफ्टर आउटबीटिंग द कंपटीशन जो लोकल है. सो मार्केट शेयर अभी 6% 7% के रेंज में है, लेकिन वी आर ग्रोइंग फास्टर देन द मार्केट, इसलिए उम्मीद है कि हमारा मार्केट शेयर जो है विल इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड. राइस में वी आर इन दैट रेंज ऑफ अराउंड 6% 7%. नंबर 3 प्लेयर है राइस में, जबकि राइस में अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी है, लेकिन हम लोग लास्ट 4-5 साल में वी हैव कम इन टू दिस. आगे चल के सोया वड़ी है जो चंक्स है, इसमें हम लोग नंबर 2 प्लेयर है विद 18 to 20% मार्केट शेयर. इस तरह से हर प्रोडक्ट में नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 के अंदर है. सो कोई भी हम एसेंशियल्स, किचन एसेंशियल्स में ऑपरेट करते हैं, अब इसी नंबर के ट्राई करते हैं कि विद इन 1 to 3 में रहे. Now, most of the companies are now focusing to improve their digital presence. So, what are your plans? लास्ट 2-3 साल में द ई कॉमर्स हैव एक्चुअली डन वेल, और ई कॉमर्स में जो ग्रोथ है हम सभी लोग देख सकते हैं कि ई कॉमर्स के में ग्रोसरी का जो ग्रोथ है वो फास्ट हुआ है. एडिबल ऑयल में क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है तो कंज्यूमर्स आज भी जनरल ट्रेड से ज्यादा खरीदते हैं. तो 90% बिजनेस कम्स फ्रॉम जनरल ट्रेड, 5% आता है मॉडर्न ट्रेड और 5% फ्रॉम द ई कॉमर्स. लेकिन जब आप स्टेपल्स देखेंगे, पैक्ड आटा, चावल, चीनी, दाल, ये सब जो है 15% ई कॉमर्स से आता है एंड 10% मॉडर्न ट्रेड एंड 75% फ्रॉम द जनरल ट्रेड. नाउ फॉर अस वी आर नंबर 1 प्लेयर इन द मॉडर्न ट्रेड. अगर आप एडिबल ऑयल का बात करें तो अराउंड 30% जो मॉडर्न ट्रेड में जो ई कॉमर्स में शेयर है वो अदानी विल्मर के पास है, जो फॉर्चून ब्रांड है मेनली. नाउ कंज्यूमर जो है, आप देखिए जनरली नेशनल ब्रांड पे ज्यादा विश्वास करते हैं, और जब आप कोई कंज्यूमर फॉर्चून मस्टर्ड ऑयल खरीदता है तो उसे फॉर्चून आटा लेने में दिक्कत नहीं है, बिकॉज उन्हें मालूम है कि ये प्रोडक्ट, ये कंपनी अच्छा है. सो नेशनल ब्रांड्स विल ऑलवेज प्ले ओवर लोकल एंड रीजनल ब्रांड्स, क्योंकि कॉन्फिडेंस ऑफ ए कंज्यूमर इज ऑलवेज ऑन ए नेशनल ब्रांड. और हम लोग यही देख रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल एंड रीजनल ब्रांड. और फॉर्चून ऑनलाइन आज हमारे 25 सिटीज में एक्टिव है, तो हम लोग यहीं से ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर देते हैं. तो आगे चल के हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आएंगे जो हम लोग कोशिश करेंगे ई कॉमर्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट डेवलप किया जाए. So, do you believe that the company's focus on the growth of FMCG and packaged food business and shift to value-added products will result in increased market share and expansion of margins? Yeah, absolutely right. What you said is correct. The food product otherwise also give better margins as compared to edible oil. And as we said earlier, we have been able to transform this company from edible oil to the food FMCG company. Today, food basket is contributes to around 11% of our overall volume, whereas edible oil gives 65%, and rest of the 25% comes from the industry essential. As we move forward, we have a plans, as we said earlier also, that the whole focus of the company is going to be on the food business. And as a part of this whole strategy, we would not only be
selling wheat flour, rice, besan, pulses, sugar, which is right now today in the food portfolio. But we would be also adding more and more products, which is our extension to these products. Like when you talk about the wheat flour, it can be a low sugar atta. In case of rice, it can be low GI rice. In fact, in the case of wheat flour, it can be further extension into suji, rava, maida, and other products of the wheat, refined flour, and all. Plus, RTC would of course be one of the target segment which company would be looking at. This RTC is a typically small SKU business but a high margin business. And so our expectation is of course that once this food basket today, which is 11% of overall volume in our overall scheme of things, if it goes to a respectable level, it will certainly lead to the consolidation of margin at an overall level. And we are quite hopeful that we would soon achieve this consolidation of the margins. The last question. We have seen a lot of fluctuations in volatility also in forex market. So, what would be your strategy to handle such kind of scenarios? Because international market में हम कई बार देखते हैं जैसे commodity rates है या commodity market है या फिर global market में कुछ fluctuations आती हैं तो उनका सीधा impact oil prices पर या बाकी commodities पर दिखता है. So, what do you think? What would be the balanced approach to tackle such situation? एडिबल ऑयल में इन्फ्लेशन अभी आप देखने को मिला है. लास्ट एक साल में प्राइसेस ऑलमोस्ट नॉट डबल बट हाँ 60-70% बढ़ा है. लेकिन अगर आप 5 साल का हिस्ट्री देखेंगे तो एडिबल ऑयल का प्राइसेस बहुत स्टेबल था या कुछ भी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट नहीं आया था. ये तो इस साल आया है. उसके बाद गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके ड्यूटी कट करके अराउंड 20% प्राइसेस रिड्यूस हुआ है. कमोडिटी प्राइसेस धीरे धीरे अभी इंटरनेशनली भी कम हो रहा है एंड मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ रहा है. नाउ हर कमोडिटी में, चाहे आप मेटल्स में भी देख सकते हैं, दूसरे फूड में भी देख सकते हैं, सच टाइप ऑफ जर्क्स आता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी ऐसे देखने को मिलता है. ये सीजनल इम्पैक्ट है बट एडिबल ऑयल काफी स्टेबल रहा है. बाकी जो स्टेपल्स है जो हम लोग हैंडल करते हैं, खास करके गेहूं, चावल, चीनी, दाल, ये सब स्टेडी रहा है और इसमें कोई भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इस साल देखने को नहीं मिला है. नाउ गोइंग फॉरवर्ड इंडिया में धीरे धीरे प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है. गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग ऑयल सीड प्रोडक्शन. जिस तरह से पल्सेस किया है, यही पल्सेस 4-5 साल पहले 5 मिलियन टन इंपोर्ट होता था, अभी 0 इंपोर्ट. तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में फार्मर्स जो है ये कोशिश करके और ऑयल सीड प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, जो इस साल हमको मस्टर्ड में दिख रहा है. इसलिए हम लोग मस्टर्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि क्रशिंग का कैपेसिटी और बढ़ाया जाए. एंड वी आर इन्वेस्टिंग इन डोमेस्टिक क्रशिंग. हम लोग डोमेस्टिक में सोयाबीन में भी एक्टिव है. हम लोग डोमेस्टिक में कॉटन सीड लेते हैं, राइस ब्रान ऑयल लेते हैं जो हम लोगों ने ही स्टार्ट किया था ये कैटेगरी इंडिया में. तो ये सब जो है इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा काम करते हैं ताकि देश में जितना तेल मिलता है वी आर मोर हैप्पी टू यूज आवर ओन ऑयल. Thank you so much for joining us once again, and we wish you all the best for your IPO and upcoming future goals and plans. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.